Good morning students, welcome to Commerce Campus Odisha. Today we will start with the remaining part of GST registration. ठीक अछि persons not liable for registration जे हमें already देखिथिलो. ओके तो हमें देखिबा persons not liable to registration आजी. तो काली रो जहाँ भी जिंस अछि the most important part was the threshold limit for registration माने persons liable for registration के registration करिवार निहाती दरकार. ओके तो ये आम देखिलु कौन एग्रीगेट टर्नओवर जदि एक्सीड करछि पर्टिकुलर जिंस तमरो नॉर्मली सेक्शन 22 ओवरऑल कौन कहूची ना एग्रीगेट टर्नओवर जदि एक्सीड करछि 40 लाख गुड्स रे 20 लाख सर्विसेज रे 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स तापरे थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन रे कौन होची फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाई ऑफ गुड्स रे वी हैव थ्री थिंग्स 40 20 10 सप्लाई ऑफ सर्विसेज रे वी हैव टू थिंग्स 20 एंड 10 ओके तो एटी देखो persons not liable for registration, certain persons are exempted from GST registration even if they are engaged in supply. जदि supply रे engage हेगी थिले मध्य they are exempted from GST registration. The persons exclusively supplying non-taxable or wholly exempt supplies. When a person who is engaged only in making supplies that are not taxable are wholly exempt from tax. माने मनर सेटा ऊपर जीएसटी आगे पड़ोनी किंबा सेटा कोन जीएसटी परव्यू जीएसटी लॉ अंडर आगे आसुनी तो सेमिति लोक काई हम रजिस्ट्रेशन करिया गया से चाहिले करि पारबो म माने एटा रे कोन होची नॉट लायबल माने गवर्नमेंट ताको कोन कंपलसरी किछि भी करूनी. एग्जांपल अ फार्मर सप्लाइंग रॉ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज exempt from GST. A supplier dealing only in petrol or diesel currently kept outside GST. So such persons are not required to register. तो ए पर्सन जे भी अछनी से माने रजिस्टर करिबाबो दरकार भी नाही. मो जो एग्जांपल जाको देछि these are directly from your bit questions. ओके बिट क्वेश्चंस रु जहा भी पचाचन सेडा दे दोछि ताकि तमरो टॉपिक वाइज सेडा कवर हे जिवो. फाइन फर्स्ट पॉइंट टा बुझिला टिके इंपोर्टेंट प्रोविजन डेडा तापर एग्रीकल्चरिस्ट कोइ के अलग रे देछि देखो an individual or Hindu undivided family engaged in what cultivation of land by own labor, family labor or laborers engaged under personal supervision. The supplies produced from such agricultural activities are outside the scope of GST registration. तो एमिति जो प्रोड्यूस अछि सेमति जिंसडा कोन परव्यू GST registration रो परव्यू रो कोन आउट ऑफ द स्कोप बुझी पाला. The farmer selling paddy or wheat produced from his field is not required to register irrespective of the turnover. Please note this point. ताको turnover जदी ता निजरो फार्म थाइगिरी निजरो किति के एम्प्लॉय माने जदी भी रखिची तो turnover क्रॉस कर देले मध्य गोटे एग्रीकल्चरिस्ट को केबे भी GST registration मैंडेटरी नाही माने he can voluntarily do it बुझी पाला ना नहीं but it's not mandatory. तो डिफरेंस टा बुझिला ना मते गोटे माने लाइक मते गोटे जिंसटी को फार्मर एंड एग्रीकल्चरिस्ट रो डिफरेंट कोन व्हाट्स द डिफरेंस she online managing the market. Farmer माने he is working in the agricultural field, it may be his it may not be his, but agriculturalist माने he is having something of his own, he is cultivating on his own, he is employing people or he is keeping people. तो जहाँ भी से करछि ओन लेबर फैमिली लेबर लेबरर्स एंगेज जहाँ भी तीनटा जिंस मो देछि देखो सेडी तो एमिति करे कि जदी से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस किछि करूछि एंड ही इज सेलिंग इट एंड इवन इफ द थ्रेशोल्ड लिमिट हैज क्रॉस्ड he is never liable to get registered himself in the GST. Number 2. Number 3 देखो the government on recommendation of the GST council may notify special categories of persons exempt from registration. When a person exclusively engaged in making supplies of taxable goods up to 40 lakhs turnover threshold, certain service providers with up to 20 lakhs and 10 lakhs in the special states. If a person engaged partly in taxable supply and partly in exempt or non-taxable supply, बुझी पाला directly से उड़ा कोई दीच. A person engaged in exempt supply can voluntarily register but usually discouraged as no ITC benefit is received. जेहेतु ताको किछि बेनिफिट मिलैनि त से काई खालटारे जाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन करिवो जे ताको घरे के कहियो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करला हम घरे कोन सो मान लीजिए से करिया जाई वॉलंटरली जे ताको छोटे इंस्पिरेशन मिलुची सेड्रु तो से करियो बाकी तार निजर किछि हेले बेनिफिट नाही से बोतल टिके. तो समरी देखो म ऑलरेडी दे दी छेडी
किछि डाउट्स ए सेक्शन रे? ओके फाइन पक्का गोटे क्वेश्चन आसीबो काहेकि जेहेतु एडा मैंडेटरी नाही से पचारले पिलाने कंफ्यूज हे होचंदी माने से जदी जाईगिरी रजिस्ट्रेशन करै देला ना तो एडा कोन वैलिड नाही एले पचारलाडो पिलाने टिके कंफ्यूज हे होचंदी कि इट इज वैलिड ही कैन वॉलंटरीली डू माने से प्रोहिबिट हे नहीं बुझी पारछ ना ही इज नॉट लायबल तो डिफरेंस टा क्लियरली बुझो तो एडी लिखि दे पारिबो कि these set of people are not prohibited but not mandated. Transfer of business section 22 subsection 3 and subsection 4 तो सक्सेशन और ट्रांसफर काले हम ऑलरेडी देखिथिलो एडा हम इन डिटेल रे देखिबो आजि तो मु काली कहिथिली ऑलरेडी देखो व्हेन अ बिजनेस इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू एनी रीजन कौन रीजन सेल गिफ्ट ट्रांसफर डेथ ऑफ प्रोपराइटर एक्सेट्रा द ट्रांसफरी और द सक्सेसर मस्ट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर और सक्सेशन मु इवन एग्जांपल मध्ये दे देछि सोल प्रोपराइटर खत्म हो गया तो लीगल हेयर कंटिन्यूज देयर बिजनेस हेयर मस्ट टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ जदिने से मरियला 3-4 जण कहि दो कि तांकर जे भी अछि मरियल लाली संगे संगे से पळेबो कोन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नवा पे गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग दैट हां लीगल हेयर गवर्नमेंट एते इन द क्रूएल मैनर रे गुटे रूल टा करछ ओके फाइन देन अमलगमेशन एंड डीमर्जर when a business is transferred due to amalgamation merger demerger or transfer of going concern as per an order of the high court tribunal etc the transferee company must take registration from the date of certificate of incorporation issued by ROC to give effect to such order. तो मनर कंपनी ए मर्ज करछि कंपनी बी सहित थ्रू एनसीएलटी रो ऑर्डर कंपनी लॉ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल गुटे ऑर्डर देला एंड कंपनी ए इज मर्जिंग with the company B. The company B is the transferee and the company A is the transferor. The transferee ji achi must register from the effective date mentioned in ROC incorporation certificate. So effective date of registration कौन है ये ना ROC जो incorporation certificate देची से certificate रे जो date टा mention हीची से date रे के जाएगी GST registration करियर अछि के करेबो transferee करेबो तो एडी ए केस रे के करेबो कंपनी बी करेबो हला एटा टिके इंपोर्टेंट पॉइंट है तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन पचाची 2-3 मार्क्स रो काहेकि एटा रे तुमको दी तीनटा जिंस अछि ट्रांसफर और ट्रांसफरी के आइडेंटिफाई करियर अछि इफेक्टिव डेट पकेयार अछि एंड तुमको के जाई कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आनिबो सेटा मध्ये कयाबो पड़े बुझिला तो देखो मोडे सब्सटेंस एटा रे दे दी छी नॉर्मल ट्रांसफर और सक्सेशन रे कोन होची रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर प्लीज नोट दिस पॉइंट नॉर्मल केस रे डेट ऑफ ट्रांसफर रो बट एडी जदि कोर्ट की ट्राइब्यूनल की कोर्ट जदि ऑर्डर करला ट्रांसफर करिया पे कि मर्ज करिया पे डीमर्ज करिया पे तो जो डेट सीए मेंशन करछि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रे कि ए डेट रे मतलब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आसिला कि इफेक्टिव डेट जो सेटा मेंशन करछि से डेट रो तुमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना करिबाबो पड़िबो तमरो ए जो पॉइंट ता अछि जो मु अलगा करके देछि हैशटैग करके रखियो बिकॉज़ एडारो एग्जाम क्वेश्चंस आसुछि मु सेडी जो आसुछि से जिंस रे एटा लिंक करबी गई Which doubts? देखो compulsory registration even if the turnover is below threshold please note this point below threshold माने कौन जो लिमिट एक्सीड करले जो लाइक जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेट होची सेडा क्रॉस न करिले मध्य का पे कंपलसरी अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट ए लोकानहु एडा कौन निहाती दरकार इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज बट एग्जेम्पशन टू इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज up to 20 handicraft goods up to threshold casual taxable person making taxable supplies person required to pay under reverse charge mechanism exemption का मिलची small advocate supplying services to non business clients हला then electronic commerce operator suppliers through eco माने electronic commerce operator liable who are liable to collect TCS small service providers को exemption अच्छी non resident taxable person making taxable supplies person required to deduct TDS under GST, person required to collect TCS under GST, input service, distributors, supplier of OIDAR services. OIDAR माने outside India to unregistered persons to in India. Good person अच्छी जी outside India रो
unregistered persons in India को मध्य किछि कौन करछि services supply करूछि then other notified person. Okay. डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो एथिरे किछि माने बुल्ले की पचर लालिया जिंस किछि भी नहीं तुमको से नोटिफाइड पर्सन्स जो क्वेश्चन गुडा अछि सेडा एबे आसीबोनी सेडा तमरो फाइनल रे अछि notified persons किए का कोन एग्जाम्पशन मिलछि बिकॉज़ यू आर लाइक गिविंग एग्जाम फॉर 50 मार्क्स तो तुमको जहां भी क्वेश्चन आसीबो इट्स क्वाइट डायरेक्ट बट you can also guess where the question is coming from. Person not liable to get registered रो तुमको अधिक क्वेश्चन आसीबो बिकॉज़ सेथिरे से उल्टा करी की पचाछि माने से लोकानो दरकार नै से माने पूरा निज इच्छा रे डांस करी करी की जाई की जीएसटी रजिस्ट्रेशन आन दे चंदी तो सेटा कोनडा सेकंड पॉइंट ओके casual taxable person making taxable supply सेले कहले कोन म एक्चुअली डरियले ओके ता मीनिंग होची गुटे पर्सन रैंडमली मनर असला काली हम क्लास रे ऑलरेडी डिस्कस करथुलो सी एग्जांपल मध्ये देखिला कि इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज ब्रिंगिंग समथिंग he doesn't belong to that particular place सी आसी किछि बिकियार जदी स्टार्ट करला ता निजो ये तो दैट इज casual taxable person ताकु भी किछि इनकम होथियो इवन कयो गले सेडी जो लोक रहू जने ताडो अधिक मध्ये इनकम होथिबो बुझी पालो ना नहीं तो से पर्सन को कंपलसरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन आनी बाबू पड़िबो एडार अछि आपको संगे संगे मिलेबो किछि गुटे फॉर्म रे किछि दिन पई जे दिन से काम करे से दिन पई ताको अलग रे मिलुछ तो ए पर्सन मानु को कोन जिमिति एलले लाइक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करिबा को पड़िबो these are casual taxable person casually कहले they are not having a place of business in that particular place ताकि कोड रो गुटे आसी कि तांकर प्लेस ऑफ बिजनेस तो सेटअप करचने से जाय देखा कोन डाउट अछि बुझला तमन ओके आज्ञा ई कॉमर्स ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एटा बुझु तो हम पढ़थिलु ओके हे तुमको ए पॉइंट रे से कंफ्यूज करिके तांकर टर्नओवर किछि नै तांकर किछि बिजनेस हे नै तांकर लॉस हे हला से दुख टिके सुनियो चेष्टा करियो बट यू शुड नॉट बी कन्विंस्ड नाइ नाइ भाई तुम दुख तुमरो आम दुख हमरो तुम दुख सुनी जदि हमें कन्विंस हे कि हम कहि दिलु नाइ थाओ भाई दरकार नै एते दुख रे कोन रजिस्ट्रेशन करियो जीरो दे दो आ एग्जामिनर तो दुख बुझियो ना ओके टिके ये पॉइंट इंपोर्टेंट मार्क कर देबो जो माने लाइक ये रो एग्जामिशन मिली पारिबो माने जो नोटिफिकेशन रे एग्जामिशन मिली पारिबो for small service providers making interstate supply handicraft goods suppliers notified small sellers through eco तो गुटे जिंस सबोले पे मन रखिबो जदी तुमको लागु छी कि ए पर्टिकुलर पर्सन comes under the exemption category of the notified persons तो तमे कहिबो कोन कि we assume that this particular small service provider comes under the exemption under the notified cases as prescribed by the government एति कि लेखि कि पुणी तमे सेटा लिखिबो नल तो कोन तमे हिंदी हे जिवो कि तमे डायरेक्टली स्टेट कर दोछ कहि बुझिला ए कोन न कोन टेकला रखो जल पाखरो कोन ने कहले म बेतरे वेट 7 करोड़ procedure for registration what section 25 requires who and when to apply every person liable under section 22 or 24 must apply for registration in each state or union territory where liable within 30 days of becoming liable casual or non-resident taxable person have special timelines okay तुम गुटे गुटे करी गिरी सेटा दे देछि देखा
एटा किछि रेलेवेंट नै खाली तमरो सिलेबस रे अछि कहि कि तमे देखिया कथा गुटे जिंस मन रखो कि विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल हैला है पर्सन औथरे काय तबला बजौचो must apply for registration within लेखुनमा within 30 days from where of becoming liable माने जो दिन से ऊपर जहाँ भी अच्छे सेड़ा 10 पॉइंट्स रे जोड़ा भी अट्रैक्ट करला किंबा थ्रेशोल्ड क्रॉस करला ठीक अछि भाई ना ऑल गुड application on how to start ठीक है देखो एथरे किछि तमरो ये रे पार्ट ए प्री अप्लाई कोन दबो से सब जिंस लेखा है ठीक है देखो गो थ्रू करो कोन डाउट थिले पचारो काई फॉर्म गुडा का खाली दिया है खाली एडा गुड जिंस मन रखो टेम्पररी रेफरेंस नंबर कोन काओ दिया होची तापरे फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 फॉर्म जीएसटी आरईजी 02 ऑप्ट्स फॉर आधार ऑथेंटिकेशन अच्छा प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ सप्लाई टैक्स थ्योरी नथिले तमे प्रैक्टिकल करि परिबो एग्जाम रे यू डोंट गेट थ्योरी यू गेट सॉर्ट ऑफ केस लॉस हाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कस्टम भी अच्छी ना तो टैक्स वगैरह सब से टैक्स टाइप तो हां किछि डाउट नै डरे रूल 9 रे किछि डाउट अछि रूल 10 टिके देखो ना ना टिके डिफरेंट अछि रूल 10 इज टिके इंपोर्टेंट हां सेडा तो ऑब्वियसली रूल 10 ला टिके देखो रूल 10 टिके इंपोर्टेंट ऑन अप्रूवल ऑफ सर्टिफिकेट इन फॉर्म GST REG 06 is made available on common portal and GST IN is assigned तो को फॉर्म रे तुमको सर्टिफिकेट मिले दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन structure to charge state code plus 10 charge per PAN or TAN plus 2 entity code plus 1 checksum whatever it is एते किछ दरकार नै हमें एटा ऑलरेडी पढ़ दै छु GST IN रे क्वेश्चन सब मन रखो को फॉर्म रे सेटा आसीबो एंड इफेक्टिव डेट if application was filed within 30 days of becoming liable registration is effective from the date the person became liable if filed after 30 days effective date is the date of grant certificate signed or verified electronically by the officer तो टिके मन रखो एप्लीकेशन जदी 30 days of becoming liable भितरे फाइल हेउची तो registration केबेडो इफेक्टिव ना from the date the person became liable जदी फाइल हिची 30 days ପରେ तो इफेक्टिव डेट केबे grant date of grant very important direct question एडारू आसुछ किछ डाउट अछि कार लाइक मैम ये काफी लाइबल है बट सी 5 डेज रजिस्ट्रेशन करला तो तार को दिन स्टार्ट किछ नहीं ऑटोमेटिक सिर्फ दिएगा विद इन 30 डेज अंडर काम करो
After REG 06 is made available, the registered person, except those registered under EDA Chardya, must furnish bank account details on the portal within 30 days of grant of registration or before furnishing outward supplies in form GSTR1 using IFF, whichever is earlier. तो खाली EDA REG 06 is made available, registered person को कौन 30 days माने registration certificate grant हबार 30 days भितरे relevant bank details and other applications file करिबा को पड़े. ओके तापर हम तमरो आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ द की पर्सन माने प्रोप्राइटर पार्टनर एमडी ऑथराइज्ड एजेंट की तार नॉमिनी जहां भी जो जिंस से मागुची से जा सब करबा को पड़िबो तापर रेवोकेशन जदी करबो वाली कहले फॉर्म आरईजी 21 रिफंड मागिबो आरएफटी 01 अंडर रूल 89 तो रिफंड आईजीएसटी एक्सपोर्ट जहां भी अछि जो भी रेलेवेंट जिंस तमो करबा को पड़िबो सेडा तमे करबो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट्स. ओके एथे रूल माने को फॉर्म्स इंपोर्टेंट म ऑलरेडी कहि दैछि आरईजी 06 गुटे जीएसटी आरईजी 06 एंड केते दिन भितर कोन हबो कहि कि एंड एप्लीकेशन को जिंस रे फाइल करबो जोडा म आगुर कहितली सेटा. ओके देन अ पर्सन विथ मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स may seek separate registration for each vertical काली जो क्वेश्चन में पचारथिली in the same state or union territory by filing a separate form REG 1 for that vertical. Conditions apply. For example, incompatibility between composition or normal treatment, usual verification or grant procedure. जहाँ भी जोड़ा भी applicable अच्छी सब जगह जेमिति apply हबा कथा सेमति apply हिजबो से गुटे जिंस कोची कोन multiple business verticals माने गुटे का स्टेट भितर multiple places of business जदी अच्छी he may seek separate registration for each particular vertical माने each place of business को अलगा अलगा manner रे कोन GST registration आनी पारिबो in which form GST REG 01 very important. ए गोटे पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट मु कहितली ए पॉइंट बारंबार आसीबो काली कहितली. ओके प्रोवाइडेड ताको ईच इंडिविजुअल बुझुनी कि कोन ईच इंडिविजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस पई अलगा रे सब रूल्स अगेन फॉलो करिया पड़िबो जदी गुटे भी रूल कंप्लाई होनी तो अगेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन दा सिमतिया के एपट सपड हबो. किछ डाउट्स? If tax authorities find via survey, inquiry or inspection such proceedings that a person liable to register has failed to apply, the proper officer may grant temporary registration and issue form GST REG 12. जदि तुम registration करना से तुम गाली करियो से कहबे ओ भूली होइछे रे हो ठीक अछि मु दे दोछ इनको एको फॉर्म रे देबो फॉर्म GST REG 12. Temporary registration केबडो effective from the date of order. The person given temporary registration must file a regular application within 90 days of that order. बुझी पाला डेट ऑफ ऑर्डर जो लाइक ऑर्डर रे जो डेट अछि सेतोल्ड से रजिस्ट्रेशन दा वैलिडली कहि के हमें कहि परिया माने से दिन रो सी कोन जीएसटी ऑब्टेन कर देछि कहि के हमें कहि परिबो. तो एडा गुटे जिंस खाली मन रखो जदी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ग्रांट करूछि तो को फॉर्म रे दबा जीएसटी आरईजी 12. जो फॉर्म मो कहछि प्लीज मन रखिबो से तो मो देइ छिपा मो कहूछि अलगा रे ए केते जगह अछि ना 13 अछि 6 अछि 12 अछि हेडी एडा कोन certain special entities require a unique identity number. They apply electronically in form GST REG 13. The proper officer may assign a UIN and issue a certificate in form GST REG 06 usually within a short timeline within 3 days. चाहे जदि को एंटिटीज को माने पर्टिकुलरली किछि एंटिटीज को यूनिक आइडेंटिटी नंबर रिक्वायरमेंट अछि तो तांके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म रे अप्लाई करि परिबे बट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कोन फॉर्म जीएसटी आरईजी 13 यूनिक आइडेंटिटी नंबर पई एंड जहां भी से सर्टिफिकेट अप्रूव करियो इट्स ऑलवेज इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 06. ओके where officer requires physical verification of the place of business before or after grant, the verification report and photos must be uploaded in form GST REG 30 within 15 working days after verification. The rule interacts with the provisions in Rule 9. जैसे कौन कहूँ देखा जदि ऑफिसर को फिजिकल वेरिफिकेशन करिबाला निहाती दरकार प्लेस ऑफ बिजनेस रो ताको जदि लाकिला कि he deems fit तो वेरिफिकेशन रिपोर्ट और फोटोस कोन REG 30 रे अपलोड हबार अछि विदिन 15 वर्किंग डेज आफ्टर वेरिफिकेशन. तो सी आसी की वेरीफाई करला पर विदिन 15 डेज द रेलेवेंट फोटोस जहां भी से कोइ छि जहां भी रिपोर्ट कोइ छि सेडा अपलोड हबार अछि कोडा रे REG 30.
ठीक है देखो तले देइछि मु ए मु जानथिली कि ए जाय तुम लिखियो नेले कॉन्फिडेंस अच्छा बहुत बहुत लकी के बड़ों से नहीं थोड़ी तो वहां से इसको नहीं तो नहीं ये जगह है ये बात बोलने की नहीं आप बताइए ये जगह है पाट्टी बंद करी पाठ पढ़े मेरे दांत में कुछ शॉर्ट रे देइछि मो सेटा लॉन्ग क्वेश्चन पई कोडा कोड केमती डाउनलोड करियो कोडा रे दबो सर्टिफिकेट कोन अच्छा एटा टिके इंपोर्टेंट मार्क करिवे सर्टिफिकेट रे कोन ए सर्टिफिकेट रे कोन थबो जीएसटीआईएन लीगल नेम ट्रेड नेम टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिव डेट 3 मार्क्स क्वेश्चन डायरेक्टली आसुची कि सर्टिफिकेट रे कोन थियो अरे सर्टिफिकेट से दो जे कोन थियो तुम मु कोन जानछि मते देछि ना कोन थिबो जीएसटीआईएन थिबो लीगल नेम थिबो ट्रेड नेम थिबो जिंदगी मो फॉर्म रे ना जाय मन दोथिले काली टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिव डेट देख शॉर्ट रे जहां भी अछि सब जगह देछि अगेन दैट वाज फॉर योर इंडिविजुअल क्वेश्चन जदि इंडिविजुअली क्वेश्चन पचाले कोन करबो एडा होछि ओवरऑल क्वेश्चन पे टाइम लिमिटेड टिके इंपोर्टेंट मार्क करिए विद इन 45 days of grant of registration or by due date of filing first written GSTR 3B whichever is earlier टीम रजिस्ट्रेशन कोन तमे जानछ ऑलरेडी जदि एसजीएसटी यूजीएसटी रे एप्लीकेबल हेगी जदि से रजिस्ट्रेशन करैछि देन वी कैन अज्यूम एंड वी कैन प्रेज्यूम आल्सो दैट से सीजीएसटी पाई मध्य रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर देछि कहिगिरी जदि जीएसटी लॉ अंडर जेतिकी भी अलग अलग लॉ मर्ज हेछि तो आमे कोन कहया कि से जा पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर कहिगिरी जदि जीएसटी रजिस्ट्रेशन से ऑब्टेन कर देछि तो वी कैन अज्यूम दैट वी कैन एंटिसिपेट दैट से सब लॉ से कोन कंप्लाई करछि कहि एडा टिके देखो सीटीपी माने होछि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन से माने एटलीस्ट 5 days बिफोर कमेंसिंग बिजनेस तांका बिजनेस स्टार्ट होबर 5 days आगरे मिनिमम तांको कोन अप्लाई करियो पड़ियो 10 दिन आगरे करले हबो मिनिमम 5 days हां म खाली चेक करथि के सुनुछि is valid for केत दिन 90 days extendable by further 90 days they must make an advance deposit of tax equivalent to estimated liability during the validity period advance deposit of tax माने कोन आगु टैक्स टा पेमेंट कर दबो such advance is credited to the electronic cash ledger कोन हम पढबो सेथरे जाईगिर तमर कोन taxable amount टा जाईगी समेशन हबो तो दिस इज एन इंपोर्टेंट थिंग खाली दीडा जिंस मन रखिबो कोन कि केते दिन भितर मिनिमम पीरियड केते मिनिमम 5 days आगरे ताको करिबा को पड़िबो मैक्सिमम से किछि कहन तू आज करी कि 2 वर्ष पर करले गवर्नमेंट किछि कहन किछि खराब आ भाबियन रजिस्ट्रेशन केते दिन पे वैलिड हाउ मेनी मंथ्स 3 months एक्सटेंड केते ही पारियो आउ 3 months तो मैक्सिमम केते गोटे परसेंट टेन्योर सीटीपी और एनआरटीपी 6 months okay max tenure is बट गोटे थरे 6 मास के बेले मिलेबोनी एक्सटेंड करि पारे कैंसलेशन देखा registration can be cancelled on application by the registered person केतळगु discontinuance transfer change in constitution no longer liable or by proper officer on his own motion माने मनर fraudulent registration non filing of returns जा भी करला निजेले करि पारे जदि ता ऊपर सीए रागेले मध्य सीए भी बंद कर देबो
From date determined by the officer, liability to pay tax and file returns remains up to the cancellation date. Pending inquiry, registration may be kept suspended temporarily. कि किछि करन मोरा भूल देखो cancellation टा केबडो effective from the date determined by the officer, but liability to pay tax file return सब जगह रहिबो cancellation date जाई सेडा रहिबो से कहियो cancel तो हेछि मो काई देई मो देई नि जा कहले हबन चापड़ा पके दो एडा very important. Government केतळको cancel करि परिबो ए जाको does not conduct business from declared place of business. Place of business गुटे कर देछि कोजे सेडी इंटरनेट कनेक्शन भल नै एसी लाउनी, we don't have any good shops near that, तो मते इच्छा होनी सेडर काम करियो मो घरडो करि मो वर्क फ्रॉम होम करि कहले हम issues invoices or bills without supply of goods or services, fake invoicing. First से कहूची मो वाउचर टा दे दी गुड्स पर केतळ पठेओ कहले हबो कि घर पड़ाली कहियो violates anti profiteering provisions एडा अछि तमे पढिबो relevant provisions जहा भी अछि applicable laws जदि सेडा फॉलो करनी तो देन आल्सो कैंसिल हबो. बैंक डिटेल्स प्रेस्क्राइब टाइम हम पढथिलु के दिन प्रेस्क्राइब टाइम कण 30 अच्छा within 30 days of grant of not funding or 50 days 45 days हेला पेज बुलेला भितरे अंदर दिन मैचिंग कर तू कोन ताकू डिस्काउंट दोच म तो पॉलिसी बाइंडिंग तो उसका क्या तू साइड ले रहा है. Non compliance with Aadhaar authentication utilizes ITC in violation of section 16. ए देखो पाठ बेसी हैला जो क्वेश्चन आसीबो सेडा देखो 6 पॉइंट्स अछि से 7 मार्क्स में पचार छी तो गुटे पॉइंट तमे डाबा मारि पारियो इफ द रजिस्ट्रार फील्स इट नेसेसरी कि से पब्लिक को कोन पब्लिक सहित खेलला पब्लिक मनी सहित खेलला अधिक टैक्स इवेशन कला व्हाटएवर इट इज तो ए केस रे रजिस्टर्ड पर्सन जे अछि तार लाइसेंस टा कोन लाइसेंस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन टा कैंसिल हे जो माने जीएसटी आईएन टा इनवैलिड हे जिवो. Issue show cause notice and form GST REG 17 very important. Code year is show cause notice dabo. Person must reply in GST REG 18. If reply satisfactory, order ta kono GST REG 20 re hobo. If reply not satisfactory, registration cancelled by form GST REG 19 within 30 days of reply. When registration is cancelled by proper officer on his own motion, registered person may apply for revocation. Application in form GST REG 21 within 30 days from the service of cancellation order. Officer may issue show cause notice and form GST REG 23. Reply in REG 24 within 7 days. So if satisfied, revocation order in form GST REG 22 within 30 days. Revocation not allowed if returns not filed or tax not paid. Person must file pending returns and pay dues. जदि रजिस्टर्ड ऑफिसर कैंसिल कर दो प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर दो ये कह कि नाइ 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 मो कथा टिके सुनो कह कि ये कोन रेवोकेशन पई अप्लाई करि पारिबो. तो मैं एडी देई देछि को जिंस दरकार को जिंस दरकार नहीं तो यू कैन सी इट. पिला ने लिखु छ केबे देखिछ लिखिया पिला ना लिखी के हल्ला मते को no कोन हां सेडा लाउच म ये नहीं सी हबो ये तो टे लिखु ताकू बोलछ किसी doubts अच्छी. Thank you so much. This is the end of the registration chapter. We'll continue with the remaining chapters.